Jai Jagannath. Welcome to my today's class on entrepreneurship and startup. Today we'll learn on the formation and incorporation of legal entities. We'll explore different business structures and the steps required to incorporate them under the Companies Act 2013. This presentation aims to provide a comprehensive understanding of various options available to the entrepreneurs and the legal requirements involved. So, let's start. Introduction. Choosing the right business structure is crucial for an entrepreneur. It affects everything from liability to taxes and the ability to raise capital. Understanding the incorporation process ensures compliance with legal requirements and helps in setting a strong foundation for business. Setting a strong foundation for business. Today we'll delve into the different types of legal entities and the steps involved in incorporating them. So let's dive into the details of different structures of businesses. Types of legal entities. Generally, these 7 types of legal entities present. First is sole proprietorship. Sole proprietorship is a business owned and operated by single individual. Owned and operated by single person. Then HUF or Hindu Undivided Family Business, a business owned by members of a Hindu family. Owned by member of HUF. Next is partnership. A business owned by 2 or more persons who share profitability among themselves in the business. Then company. Company is a separate legal entity which can be either private company or a public company. We'll explain in detail in next slides. Then is statutory bodies and corporations. Entities created by special acts of parliament or state assemblies are covered under this. Then cooperative societies and trusts, organization formed for the mutual benefits of its members for charitable purposes. Mutual benefit of members or for charity. Then limited liability partnership, a partnership with limited liability of the partners. That means partners liability is limited up to his capital. Okay, so these are the types of legal entities. Now
let us understand what are the types of companies. Let us classify. Companies can be classified based on their incorporation under two categories. One is statutory company, another is registered company. Statutory companies are set up by special act of parliament. By special act of parliament or state assembly. We can take an example like RBI, Reserve Bank of India. Reserve Bank of India is a company which is formed by a special act of the parliament. Then registered companies. Registered companies means that we know all, that is companies incorporated under the Companies Act 2013. Companies Act 2013 or any previous act, that is 1956 Act. So most private and public companies are generally fall under this registered company category. So next we will see companies can also be classified based on the liability of the companies. So here we can see three types of companies. First is unlimited liability company, companies limited by guarantee, and companies limited by shares. Unlimited liability company means members are liable for company's debts and losses. That is, members' liability is not limited to its shares value, not limited to capital. ये आ जाएगा अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के अंदर में. That means they are all liable for all the losses and debts of the company. Owner is liable for everything. Then second category is companies limited by guarantee, under which members are liable only up to a certain amount. Typically when the company incurs losses or is winding up. Then third category is limited by share. This is normally companies, most of the companies fall under this category, that is members are liable only up to the unpaid value of their shares. That is, their liability is up to the invested capital only, invested equity share capital only, not more than that. Then we see other forms. Then we will see on the basis of members. Companies classified on the basis of members. First is one person company, second is private limited company, third is public limited company. One person company is a company type of company which was introduced by Companies Act 2013. It was not there before this act. This allows a sole investors to form a company with limited liability. One person can be owner. Generally for forming a private company, at least 2% must be there to form a private company, but this one person company has been introduced by the Companies Act 2013. Next is private limited company. A company whose ownership is private with a maximum of 200 members. It cannot issue share to the public. Shares issue नहीं कर सकता ये. किसको? पब्लिक को. ये नहीं कर सकता. Then third category is public limited company. A company whose securities are traded on stock exchange. It can be formed with a minimum 7 members and
3 directors, 7 members and 3 directors, and the shares can be transferred easily, and these shares are easily tradable to with the public. That is, public can purchase the share of this public limited company. Generally, most of the companies we see are covered under public limited companies. Private companies are generally, you learn everything in your intermediate and foundation, what is private limited company, what is public limited, so nothing more to explain here. No? Just for the sake of understanding, I am just covering the syllabus only. So then see other forms of companies. So there are several other forms of companies. Here we'll see 9 other forms. Association not for profit companies, registered under section 8 of Companies Act 2013. These companies are formed for promoting commerce, art, science, or any other useful purposes. Next is government companies, where paid up share capital more than 50, at least 51% must be with the government. Then it is a government company. Then foreign companies, companies incorporated outside India but conducting business in India. बाहर की कंपनी है बट बिजनेस इंडिया में कर रही है, एमएनसी जिसको हम बोलते हैं. होल्डिंग एंड सब्सिडारी कंपनीज, ए होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स वन और मोर सब्सिडरी कंपनीज. मतलब एक पेरेंट कंपनी रहेगा, उसके नीचे एक कंपनी रहेगा, तो पेरेंट कंपनी होल्डिंग में और इसका नीचे वाला कंपनी सब्सिडरी कंपनी है. देन एसोसिएट कंपनीज और जॉइंट वेंचर कंपनीज, कंपनीज इन विच अनदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट इज नॉट ए सब्सिडरी. समझ में आया? एसोसिएट और जॉइंट वेंचर बोलने से क्या है, जिस कंपनी में एक कंपनी का मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है बट दैट कंपनी इज नॉट इट्स सब्सिडरी. उसका मैनेजमेंट का डिसीजन में एक कंपनी कुछ बोल सकता है, कुछ कह सकता है, उसका वहाँ पर पार्टनरशिप है, बट वो कंपनी इसका सब्सिडरी नहीं है, उसके नीचे नहीं है, दैट इज वो भी उसकी क्या पैरेलल का कंपनी है, बट इसका मैनेजमेंट, पहली कंपनी का मैनेजमेंट उस कंपनी को डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है. तो इसका मतलब क्या है, उसके साथ जुड़ा हुआ होगा, तो इट मे बी एसोसिएट कंपनी, इट मे बी ए जॉइंट वेंचर कंपनी. मतलब 2 कंपनी हो सकता है जुड़ के मिल के काम कर रहे होंगे, तब हो सकता है ये चीज़. देन इन्वेस्टमेंट कंपनीज, कंपनीज हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स और अदर सिक्योरिटीज. इन्वेस्टमेंट कंपनी बोलने से जिसका काम ये है कि दूसरे कंपनियों का शेयर, डिबेंचर्स ये सब खरीदना और उसमें इन्वेस्ट करके रखना. इन्वेस्टमेंट कंपनीज, इनका काम है इन्वेस्टमेंट करना बस. प्रोड्यूसर कंपनीज, कंपनीज फाउंड बाय प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, दैट इज सच एज फार्मर्स, डिफरेंट फार्मर्स मिलके एक कंपनी बनाते हैं, जैसे अमूल मान सकते हैं, सही है, प्रोड्यूसर कंपनी अमूल इंडिया. Then needy companies. Needy companies means public companies formed to cultivate the habit of thrift and saving among members. Generally अगर कुछ members सोसाइटी के मिलकर एक कंपनी बनाते हैं और उस कंपनी का पर्पज ये है कि उसका मेंबर्स को लोन्स देना, उनका डिपॉजिट लेना, तो उसको नीडी कंपनीज बोलते हैं. आप मान सकते हैं कि जैसे चिट फंड जैसे चलता है ना, उसी तरीके से चलता है. चिट फंड ठीक नहीं है, वो गलत तरीका है, और ये है सही तरीका है. इसमें प्रॉपर रेगुलेशंस होते हैं, ये रजिस्टर्ड रहती है निधि कंपनीज, ऐसे में से कोई नहीं होता है. तो उसी ढंग से ही होता है. यहाँ पर मेंबर्स अपने पैसा जमा रखते हैं और जिस मेंबर को जब ज़रूरत होता है वो कम ब्याज में पैसा यहाँ से लोन के तरह उठा सकता है. देन कॉल्ड डॉर्मेंट कंपनीज, companies found for future projects or to hold an asset of or intellectual property without significant accounting transactions. मतलब ये कंपनी है बट ये कुछ रेगुलर ट्रांजेक्शन नहीं कर रही है, इसको बनाया गया है, हो सकता है कुछ
पर्टिकुलर बड़ा बड़ा एसेट्स है उसको होल्ड करके रखने के लिए, उसका ऑपरेट करने के लिए, उसको मेंटेनेंस करने के लिए एक कंपनी बना दिया। उसका ट्रांजेक्शन कुछ नहीं है, एसेट को ध्यान रखना, वही उसका ट्रांजेक्शन है, तो उसको डॉर्मेंट कंपनीज बोलते हैं। जनरली आप कोई, जब हम कोई नया कंपनी स्टार्ट करते हैं तो इनकॉर्पोरेशन होने तक जितना उसका सब एसेट होल्ड कर रहता है ना एक जगह पर, वो तो कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उसको मिला है, तो उस समय तक वो क्या रहता है, डॉर्मेंट रहता है, मतलब कुछ नहीं करता है, बैठा हुआ रहता है, तो उसको भी डॉर्मेंट कंपनीज में आप कंसिडर कर सकते हैं। Then we'll see the steps to incorporate a limited liability partnership. How to incorporate a limited liability partnership? So there are 6 steps. First is user registration. Register on the Ministry of Corporate website. यूजर क्या करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का साइट में जाके रजिस्ट्रेशन करेगा। सेकेंड इज ऑप्टेन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, डिपिन नंबर। ऑल डेजिग्नेट पार्टनर्स मस्ट ऑप्टेन दिस नंबर, उनको लेना ही पड़ेगा। देन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ऑप्टेन ए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट फ्रॉम एन ऑथराइज्ड सर्टिफाइंग एजेंसी। Then reservation of name. Submit form 1 for name reservation indicating up to 6 choices. नाम फॉर्म 1 में सबमिट करना है उसको, 6 चॉइसेस एटलीस्ट देना पड़ेगा उसको, इसमें से देखना पड़ेगा कौन सा अवेलेबल है कौन सा नहीं, बट 6 चॉइस एटलीस्ट देना ही पड़ेगा। देन इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP, सबमिट फॉर्म 2। सबमिट क्या करना है इसमें, फॉर्म 1 के बाद फॉर्म 2 एंड पे द रजिस्ट्रेशन फीस। द फॉर्म मस्ट बी डिजिटली साइंड बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर एंड ए प्रोफेशनल एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द LLP. Then last step is filling of LLP agreement and partners details. Submit form 3 and 4 with the prescribed fee, either simultaneously with form 2, दो के साथ डायरेक्ट दे दो, और within 30 days of इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन होने का 30 दिन के अंदर में भी आप LLP एग्रीमेंट और पार्टनर डिटेल्स शेयर कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ। तो ये था लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का इनकॉर्पोरेशन का स्टेप्स। अभी हम देखेंगे कि कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होता है। सो लेट्स सी द स्टेप्स फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ए न्यू कंपनी। सो 7 steps are there. First is select a suitable name. Ensure it does not resemble any existing company name. नाम पूरा यूनिक होना चाहिए। Second step is apply for name availability. Submit E-Form 1A and pay the requisite fee. कौन सा फॉर्म देना है, E-Form 1। देन ड्राफ्ट मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कंपनी में तो ये दोनों जरूरी है, मेमोरेंडम, ड्राफ्ट मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अरेंज फॉर ड्राफ्टिंग एंड वेटिंग ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट 4th step is stamping of memorandum and articles. Get the documents stamped with appropriate stamp duty. जितना स्टाम्प ड्यूटी एप्लीकेबल होगा उतने का स्टाम्प पेपर पे इसको छपाना पड़ेगा। देन साइन एंड विटनेस मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। Ensure the documents are signed by at least 2 subscriber and witnessed by 1 person. मिनिमम 2 आदमी साइन करना है और 1 आदमी विटनेस करना है। फिल रिक्वायर्ड फॉर्म्स। सबमिट फॉर्म 1 डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लेंट्स, फॉर्म 18 नोटिस ऑफ सिचुएशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एंड फॉर्म
32 particulars of directors, managers, secretary. 3 फॉर्म क्या, 1 then 18 then 32. 1 क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस, कंप्लायंस सब हो रहा है उसका डिक्लेरेशन देना है. 18 क्या है, नोटिस देना है कि कहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी का, वो प्लेस. 32 क्या है, डायरेक्टर, मैनेजर एंड सेक्रेटरी का पर्टिकुलर और डिटेल्स प्रोवाइड करना है. देन 7th, ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. One of the forms are processed, obtain the certificate of incorporation from the registrar of companies. यहाँ पर कंपनी हमारा इनकॉर्पोरेट हो गया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद. देन इट इज फॉर ए प्राइवेट कंपनी, बट इफ it is a public limited company, then we have to follow additional 2 steps. First is file E-form 20 or E-form 19. File E-form 20 or E-form 19. E-form 20 क्या है, attach the statement in lieu of prospectus, that is Schedule 3 में है ना, statement in lieu of prospectus to obtain the certificate of commencement of business. क्योंकि prospectus इसमें देना पड़ेगा, क्योंकि ये पब्लिक्स को इशू होगा ना शेयर, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो prospectus नहीं देंगे तो पब्लिक कैसे खरीदेगी, तो यहाँ पर prospectus देना पड़ेगा. अटैच स्टेटमेंट इन lieu of prospectus. फाइल E-form 19. E-form 19 क्या है, अटैच द prospectus, that is Schedule 2 if applicable. These steps are necessary to comply with the requirement of public companies and to begin the business operation. Then after that obtain certificate of commencement of business. Next is additional step for Part 9 company. तो Part 9 company must file additional forms to complete the registration process. तो उसको पहले क्या करना है, E-form 37 एंड E-form 39 फाइल करना है. E-form 37 क्या है, दिस फॉर्म इज रिक्वायर्ड फॉर कंपनीज कन्वर्टिंग टू ए Part 9 कंपनी. जो कंपनी Part 9 कंपनी में कन्वर्ट होना चाहता है वो कंपनी E-form 37 फाइल करना है. देन E-form 39 क्या है, दिस फॉर्म इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉर द कन्वर्सन प्रोसेस. एंड E-form 1, 18 and 32, these forms are necessary for incorporation process. These steps ensure that the company complies with Companies Act 2013 and completes the conversion process. Part 9 कंपनी क्या है, क्या है Part 9 कंपनी, Part 9 कंपनी क्या है, a Part 9 company is a firm or registered under Companies Act 1956 and later it is converting into a company as it is. In that case 1956 act is not there and Companies Act 2013 is there, so it has to comply this form 37, 39, 118 and 32 to claim that I am a company. और E-form 1 क्या है, एप्लीकेशन एंड डिक्लेरेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी. 18 है नोटिस ऑफ सिचुएशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस देना है. देन 32 क्या है, पर्टिकुलर्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड अदर की मैनेजरल पर्सन. देन 37 क्या है, पार्टनरशिप application by partnership firm for registration under Part 9. Then 39 क्या, registration of resolution and agreement for conversion. Okay, clear. चले नेक्स्ट में चलते हैं. अभी आते हैं कंक्लूजन पे. सो इन कंक्लूजन व्हाट वी लर्न टुडे, we learned understanding the different business structures
and the incorporation process is essential for an entrepreneur. If I want to be entrepreneur, I need to know all these structures of a business. Without knowing the structures of the business, I cannot enter into a entrepreneurship, because I should know that what I am doing. If I am not doing non if I am not able to know that what I am doing today and what are the regulatory formalities I need to attend, then I will not sustain in today's competitive world. It helps in making informed decisions and ensures compliance with legal requirements. We have covered various types of legal entities here: the classification of companies, steps of incorporation of LLPs, steps for incorporation of new companies. All these are covered under this chapter. So, thank you. Jai Jagannath. We'll see in next video.